Hello, good morning everyone. You are all welcome in this platform of the Think Beyond Noise. यह करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और करंट अफेयर्स में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है जो इंडिया गेट्स 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वह क्या है, कौन सा टेम्पल है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट का क्या फ़ायदे होते हैं और ये कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। रामप्पा टेम्पल, समटाइम्स कॉल्ड द रुद्रेश्वरा टेम्पल, टेम्पल जो कि तेलंगाना में है, वह इंस्क्राइब्ड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एंड दिस इज द आल्सो ट्वीटेड बाय द यूनेस्को, दैट इज द जस्ट इंस्क्राइब्ड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट by the Kakatiya Rudraswara Ramappa temple. So you always remember that the Ramappa temple and Rudraswara temple are the same. Both belongs to Telangana. This is the inscribed on the 25th July 2020. This is the tweet by the UNESCO site. Then why it is matter? हाउ इट इज, वाई इट इज़ मैटर, इसकी क्या उपयोगिता है, क्यों यह मैटर करता है, क्यों यह न्यूज़ बना और क्यों हम लोग इसे पढ़ रहे हैं. दिस इज द मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वाई इट्स मैटर. सी द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज द लोकेशन विथ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू हियर? आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल सार्वभौमिक मूल्य. Saarvabhaumik means this is the absolute value. This is the not depends upon the place, country and other things also. The universal value, this is the outstanding universal value to this world heritage site. Since the site representing the masterpiece or the human creative, why it is outstanding? Because it is the human creative genius and exhibiting important interchange of the human value over the span of time within the culture area of the world. India is a very rich cultural country across the world, and this is the sign that we have such a type of the Ramappa temple that recognized at the 39th World Heritage List. And this decision inscribed of the Ramappa temple taken of the, this is the important 44th session of World Heritage Committee of the UNESCO, which was held in the 25 July 2020 in China, or this is held in the online because you know very well COVID pandemic. This is the all about how it's matter. Again the temple Rudraswara, again we know that this temple Ramappa is called the Rudraswara also, situated in the near Warangal. Right now situated in the Telangana state. Earlier it was the erstwhile it is called also the Andhra Pradesh, but right now it is in the Telangana. And this inscription, this temple dated is the 1213 यानी 1213वीं शताब्दी में एडी शताब्दी में यह बनाया गया. और किसने बनाया? काकतिया जनरल रुचरेला रुद्रा रेड्डी. दिस इज द ऑल्सो इम्पोर्टेंट, you should know regarding the PT examination, UPSC and also in the state PCS is a very important. और काकतिया ruler, you know very well काकतिया ruler, and you must read, we must aware of this history because of the Ganpati Deva. Ramappa is the main. This is also the called the PT alert of the any examination. This is the Shiva temple. Ramappa initially is the Shiva temple, but not only Shiva temple situated in this मंडल. only शिव जी की मूर्तिमा नहीं है, यह एक वॉलेट टाइप का टेम्पल है जिसमें बहुत छोटे छोटे टेम्पल और स्ट्रक्चर बने हुए हैं. और ये स्ट्रक्चर बने हुए सैंडस्टोन का और डेकोरेटेड बीम है यहाँ पे, और पिलर कार्व बाय ग्रेनाइट एंड डोलेराइट. सी द टेम्पल है. This is the temple. This is the temple. It is a very very big temple and largest temple. This is not only dedicated to the primary to the शिव जी, but it is not only छोटे छोटे टेम्पल ग्रेनाइट का बने हुए हैं, देख रहे हैं आप. This is the our culture, Indian culture. This is the our culture, Indian culture, and also the lightweight porous brick sculpture, especially bracket figure have there the luster intact.
देन द लिस्टिंग द बैकग्राउंड देखते हैं इसका क्या होता है। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिस या जो रामाप्पा टेम्पल है इसको सबसे पहले नॉमिनेट किया गया 2019 में, और इसको टेंटेटिव लिस्ट में दिया गया 2014 में। इसको टेंटेटिव लिस्ट मतलब कि हाँ इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट होना चाहिए, जबकि इसको नामित किया गया 2019 में। इनिशियली इसको वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसकी एक इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट एंड साइट, और उसकी जो कमिटी होती है वह इसको रिजेक्ट कर दिया था। बट राइट नाउ टू द हेल्प ऑफ द रसिया ने इसको हेल्प किया to the making listing of this Ramappa temple, but the Russia helping. In the case of nomination, this is the criteria, the masterpiece of the human creative genius. Criteria 1, bearing the unique and list of the exceptional testimony of cultural tradition. Yes, cultural tradition. This is the criteria 2, which is living or which is the disappeared. This is the criteria that this temple included in the World Heritage List. Earlier, the International Council for Historic Monument and Sites had evaluated Ramappa heritage status, and it was rejected, this Ramappa temple. But right now in this summit and this meeting, this convention, this was by the help of the Russia. Finally, India got the 39th World Heritage List. 39. This temple is included in the UNESCO World Heritage Site. And 25 July, you know very well, 17 of the 21 member country. India is not included in this member country, but this is the India now the 39 site of the UNESCO World Heritage List, and the Archaeological Survey of India is custodian 39 World Heritage List. मीन्स 39 हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, जिसमें तो 23 को ASI अभी संरक्षित किए हुए देख रहा है. दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज ऑफ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन द आर्ट एंड कल्चर that is a world heritage list. This is the very good art in country, and this is the signify art because it is included in the world heritage list. Clear? So thanks and have a good day. If you like this video, please subscribe it and also like it. Thank you very much. Have a good